حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له। हमसे अब्दुल्ला बिन मुसलमा काम्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का जिक्र किया तो फरमाया कि जब तक चांद न देखो रोज़ा शुरू न करो, इसी तरह जब तक चांद न देख लो रोज़ा मौकूफ न करो, और अगर बादल छा जाए तो 30 दिन पूरे कर लो। Narrated Abdullah bin Umar. Allah's apostle mentioned Ramadan and said, do not fast unless you see the crescent of Ramadan, and do not give up fasting till you see the crescent of Shawwal. But if the sky is overcast, if you cannot see it, then act on estimation, i.e. count Shaban as 30 days.